Hi guys, welcome back to my channel FinPanda, and thanks for liking and subscribing my channel. I hope you liked the last video where we discussed the accounting standard that is called earning per share. Today we will continue that standard and we will try to wrap that standard as soon as possible. So I request you to like and share and subscribe my channel if you haven't done that. So आज हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की. सो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट शेयर की. राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर एक तरीके का प्रेफरेंशियल राइट्स होता है जो कि एक एंटिटी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, राइट. सो दे गिव टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डर टू एक्सरसाइज द राइट to buy the more equity share in the fresh issue. So it's kind of being a perk to be engaged or engaged as a shareholder with the company to the existing shareholder. So let's say company says we are giving a right issue of 1:2, then it means they are giving 2 shares against the 1 share of equity shares that you are having right now in the company. तो आपको एक के बदले में 2 शेयर मिलेंगे अगर आपके पास में 1 शेयर है तो कंपनी का. तो उस केस में हमें अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए 2 स्टेप्स फॉलो करनी होती है, ठीक है. पहली स्टेप जो होती है वो है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ थ्योरेटिकल पोस्ट राइट फेयर वैल्यू. होता क्या है, जब भी एक राइट शेयर इशू होता है उसके बाद में उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आता है. सो वंस वी रिसीव द इम्पैक्ट इन स्टॉक मार्केट वी विल गेट द new fair value which is adjusted fair value for your right shares. So this value we have to calculate. Okay, this value we have to calculate, that is theoretical post right fair value. I will tell you, just hang on with me, that how we will calculate this value for the examination purpose. The second thing is our cash flow technique. By the cash flow technique, what we will do, since I say that right share that is issued, why the existing shareholder would exercise? I mean, he can buy from easily the open market, isn't it, in the fresh issue. Why he would exercise? Because he would have some sort of gain. उसे कुछ ना किसी प्रकार का गेन मिल रहा है जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज करेगा. लेट्स से द 50 रुपीज इज द फेयर वैल्यू ऑफ राइट शेयर, नॉट द राइट शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इन द मार्केट. बट व्हाट वुड बी हैपनिंग, कंपनी वुड गिव यू राइट एक्सरसाइज with the price of 20. So that means you have a 30 rupees saving. Okay, so that is the reason you will exercise. So if you see, out of 50 you paid 20, you did not pay 30. So you see there are two elements. One you did not paid, that is bonus element. The second that you paid, that is paid element. So we have to calculate both the what we call, both the components in order to calculate our diluted earning per shares, which we will discuss later on. But this cash flow technique would be helpful in all the other financial instruments that we are seeing, like preferential dividends that we are going to convert, or the convertible debt if we have, other loan instrument if we have, that is going to be converted into the equity. So for all this purpose we will be having both the calculations, because especially in right there is a 2 elements that due to which we have to calculate this one. But for the interest, but for the convertible debt we don't need to do this because it's easy there to do this. Okay, so now let's discuss further ahead as we discuss what is right share. So I will give you example once that what is this exactly. Okay, so let's go to the example. Okay guys, so example is like we have
right issue of 1:2. Okay, so we have right issue of 1:2. Now we pull some let me delete this again and we will write it down again, all of these. Okay, so let's say we have a right issue of 1:1. Okay, thereafter we have exercise price of ₹20 and we have fair value pre-write, that is ₹50. This would be always given in exam, fair value pre-write. So if you have a fair value in exam, then it means it's a pre-write before right issue, because a post right issue we have to calculate. This would be the part of the computation. तो आपकी computation का ये part बनने वाला post right share. So no wonder that you won't be having any kind of post right fair value. So because we have to calculate this one. Thereafter we have pre-write share value, and then what we have here, we have in question like company has okay, so company has 10 lakh outstanding equity shares. Okay, now what is the solution of this one? First step is theoretical post right fair value. Okay, so theoretical post right fair value we have to calculate. Post right fair value. How we will calculate the theoretical post right fair value? Simply we have to adjust for the right impact. So now what we will do, let buy 2 primary share at the rate of 50, then you have to pay 100 rupees, but at the same time you will be having a one right share at the rate of 20. So the total cash outflow would be for you 120 rupees against 120 means 120 you will be having 3 shares. So effectively what you paid is 120 divided by 3, that is 40 rupee per share. Okay, now you have paid 40 rupee per share. Now we have calculated the post right share. Now we have to use the CF technique
figure out the two components that we have discussed. First is our what I call paid component. Sorry guys. Okay. So now we have 5 lakh right share at the rate of 20, that is 100 lakh. Okay, thereafter in this we have to calculate post fair value. I mean, we have a theoretical post fair right value. Now we have cash flow, we divide this theoretical post fair value. So we are saying the paid component is 2.5 lakh equity share. Therefore bonus element is simply 5 lakh minus 2.5 lakh. So that is 2.5 lakh is bonus element. I hope guys the concept is very much clear how we can do we can treat the right shares. Okay, so in right share, now what we need to do for bonus element, we have to make a AO, that is adjustment in opening balance. Okay, adjustment in opening balance in or Vance table. Okay, for this one paid element, we have to create one SLE, separate line item, in our Vance table. All the concept of Vance table would be same. You have to apply. Now you have calculated the adjusted opening balance. You have to restate your last year basic earning per share, since this is adjustment in opening balance. So this is all in terms of right shares we have discussed. Guys, now we will discuss what is DEPS. DEPS is simply DEPS, that is diluted earning per share. Diluted earning per share. What is this diluted earning per share? Diluted earning per share का मतलब होता है कि अगर हम आज 5 रुपये रिपोर्ट कर रहे हैं on the face of financial as an earning, it means we are saying that, or you might say we are giving a caution to the existing shareholders that it might be possible that due to some of the financial instrument जो कि हमारे बुक्स में है, some of the financial instrument like convertible debt and convertible preference shares, जिसकी वजह से हो सकता है कि tomorrow we would be not having the 5 rupees earning per share, rather it could be 4 or 3. So it's kind of caution that is based on the concept of conservatism, where conservatism say that we will book all the liabilities and the expenses but not the assets and the all or income. So this is the conservatism concept, but remember this, just conservatism, just because of this conservatism concept we will not report the anti-dilutive. So let's say if we are reporting 5 EPS today and for tomorrow we are saying that DEPS would be 6, it's not possible. You have to report EPS 5, you have to report DEPS 5, but you cannot report the DEPS of anti-dilutive. I hope you got what I'm trying to say. Okay, let's put it into the words in here what I'm trying to say here. Let's say DEPS 5 rupees and DEPS
4.5 rupees. It's possible. DPS 6 rupees, not possible due to conservatism, and it's anti-dilutive. Okay, so this is the basically DEPS. I wanted to give you, I don't want to just put you much more in the complex things in here. I just want to wrap up very early today. So let's try to finish with one of the concept that how to calculate. So the competition part is like this. Okay, you have to calculate, let's say you have 100 lakh. okay, प्रॉफिट 100 लाख हमने जो बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए कैलकुलेट किया, तो वो मान लिया हमने 100 लाख रुपीज़ है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है कुछ। जिस भी नेचर का आपका इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से इट्स कन्वर्टिबल डेट, गॉट इट। सो अगर ये कन्वर्टिबल डेट है तो इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका इम्पैक्ट, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला जो पीएस में मैंने आपको बताया था वही है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर सब डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल इम्पैक्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझने के लिए। अभी कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, बट हम कह रहे हैं टुमारो वी विल कन्वर्ट, तो उस टाइम पे इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ईपीएस पे, वो हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा हमारी अर्निंग पे, और एक हमारे डिनोमिनेटर पे। अर्निंग हमारी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, इन दो पे ही कुछ इम्पैक्ट होगा, तभी हमारा ईपीएस चेंज होता है। ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो लेट्स नाउ कन्वर्टिबल डेट की हम बात करते हैं, तो हमारा ये कहते हैं हम कि इंक्रीज कितना आपका, इंक्रीज इन अर्निंग, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है ये कि आपका इंक्रीज इन एनओएस, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स में आपका कितना इंक्रीज होता है, तो 100 लाख का मेरा मैं कहता हूँ अर्निंग है, तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% एट द रेट ऑफ 30% टैक्स, ये डेट है। ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1:2 में, मतलब 1 के बदले में 2 मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इक्विटी शेयर। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो देखो आप आपके न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करते हैं हम पहले। तो 1 लाख का जो है इनटू ये कितनी रेट की इसकी फेस वैल्यू है, मुझे में हाँ 10 रुपये का फेस वैल्यू है ना। सो 1 लाख का इंटू करके आप 10 रुपये का आपका यहाँ पे ये फेस वैल्यू है, तो आपका आ गया ये 10 लाख। हाँ, तो आपका ये आ गया 10 लाख, और जो है ये 10 लाख का आपको 10% मान लो अजूम किया हमने, ठीक है। इसके बाद में आपको पोस्ट टैक्स लेनी 1 माइनस 0.30, तो 10 लाख का 10% होता है आपका 1 लाख, और 1 लाख का पोस्ट टैक्स आपका ये होता है कितना भाई, ये आपका हो गया 70,000 रुपीज़। तो न्यूमरेटर अब आपको जाएगा 100 लाख प्लस 0.70 लाख। उसके बाद में अब आपको न्यूमरेटर कैलकुलेशन करनी है, 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 लाख के अगर आपके अगेंस्ट में आपके 2 लाख हो जाएंगे। तो जो बेसिक ईपीएस अभी हमने कैलकुलेट किया है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो जब आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये था आपकी 20 लाख प्लस अभी आपका ये हो जाएगा 2 लाख और एक्स्ट्रा,
तो अभी ये हो जाएगा आपका 22 लाख, तो ये हो जाएगा 100। तो अब आपको कैलकुलेट करना है इसका BEPS, ठीक है। तो वो आता है आपका 100 प्लस 0.70, 100.7, सो ये आ जाएगा आपका 100.70 डिवाइड बाई 20 लाख, ठीक है। 100.7 डिवाइड बाई 20, दैट इज 4.5 रुपीज़ अप्रॉक्स, ठीक है। तो पहले जो BEPS क्या था आपका, देखा आपने, आपका अगर मैं 20 लाख के हिसाब से मान रहा हूँ, वो पहले अर्निंग EPS पे थी, तो आपका जो BEPS बनता है वो बनता है आपका BEPS 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 5। और अब आपका जो ये जो है ना DEPS, ये बनता है कितना, 4.5 रुपीज़ एज वी कैलकुलेटेड डाउन बिलो। सो बोथ वुड बी रिपोर्टेड ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल्स। Okay guys, so here I just conclude my diluted earning per share. There are different kind of instrument. For preference shares you have to consider in your let me just write it down. For preference shares you have to consider in earning, because there would be no tax advantage in preference share, so you have to simply add preference dividend plus your dividend distribution tax if any, ठीक। और आपका जो डाइल्यूशन जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो सिंपल है, जितने भी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स उससे आपका ये ऐड हो जाएगा जो 20 है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर का। डिविडेंड का मतलब है राइट इशू का, मैंने आपको पता ही दिया है। इफ़ यू वन एनकाउंटर दिस सिचुएशन इन योर DEPS, सेम थिंग वुड बी हैपनिंग देयर। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस अर्निंग पर शेयर स्टैंडर्ड, दैट इज IAS-33 in IFRS, and this is in AS-23 in Indian Accounting Standard and AS-20. So alright guys, all the best for your examination preparations and all. So you guys can comment me for the video you would like me to present you in terms of accounting standard or any kind of finance related video. Thank you for watching the video. Please like and subscribe and share the video. Thank you guys. Bye. Have a great day.